Good morning, dear students. Open your book, chapter 7, Human Memory, page number 142. 142 पे आज हम करेंगे Memory as a constructive process. Listen carefully. If you were to carefully examine the initial explorations about memory process, you will perhaps conclude that memory primarily consists of reproduction of stored materials. This view was held by Ebbinghaus and his followers, who emphasized the quantity of information that can be stored in the memory and judged its accuracy by matching the concepts of storage and reproduction. If the produced version of the stored material showed any deviation, it was seen as an error and a case of memory failure. This storage metaphor of memory implied that the memory was a passive occurrence of learnt material that has been transported to its long-term storehouse. This position was challenged by Bartlett in the early 30s, who contended that memory is an active process and all that we have stored undergoes continuous change and modification. That we memorize is influenced by meaning we assign to the stimulus material and once it is committed to our memory system, it cannot remain in isolation from other cognitive process. In a sense, therefore, Bartlett saw memory as a constructive and not a reproductive process, using meaningful material such as text, folk tales, fables, etc. Bartlett attempted to understand the manner in which content of any specific memory gets affected by a person knowledge, goals, motivation, preference, and various other psychological process. He conducted simple experiments in which reading of such stimulus material was followed by a 15-minute break, and then the participant of his experiment recalled what they had read. Bartlett used the method of serial reproduction in which the participant of this experiment recalled the memory material repeatedly at varying time interval. When engaging in serial reproduction of learned material, his participants committed a wide variety of errors which Bartlett considered useful in understanding the process of memory construction. His participants alerted the text to make them more consistent with their knowledge, glozed over the unnecessary details, elaborated the main theme, and transformed the material to look for coherent and rational. So, in order to explain such findings, Bartlett evoked in the term schema, which occurring which, according to him, was an active organization of past reaction and past experiences. Schemas refer to an organization of past experience and knowledge which influence the way in which incoming information is interpreted, stored, and later retrieved. Memory, therefore, become an active process of construction where information is encoded and stored in terms of a person's understanding and within his previous knowledge and expectations. So, meमोरी इज़ अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस. क्या क्या कोई भी चीज़ जब हम सीख रहे हैं, जब हम लर्न कर रहे हैं या हमारी मेमोरी में स्टोर हो रही है, वो एक तरीके से स्टोर होती है, कंस्ट्रक्टिव मेथड से स्टोर होती है कि हम किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से लिंक कर कर कैटेगराइज कर कर या कंसेप्टिव वे में उसको अपने माइंड में सेव कर रहे हैं. तो यहाँ पे बार्लेट ने मेन इस पे काम करा. उन्होंने कहा कि उन्होंने सीरियल रिप्रोडक्शन का यूज़ करा. सीरियल रिप्रोडक्शन मीन्स कहते कोई भी चीज़ को कहा गया कि अगर हम किसी भी चीज़ को आपको काफ़ी जैसे कि सपोज़ कि 20 सेंटेंस लर्न करने के लिए दे दिए और कहा गया कि उनको सीरियल वाइज बताइए आप, तो किसी ना किसी चीज़ से आप उसको लिंक्ड करके कि फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, तो इस तरीके से हम उसे रिकॉल करते हैं, है ना. तो सीरियल रिप्रोडक्शन. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे तो देखा गया उन एक्सपेरिमेंट में कुछ ब्रेक्स दिए, उसके बाद दोबारा से वही एक्सपेरिमेंट उन पार्टिसिपेंट्स पे किए गए. तो यही देखा गया कि कितनी देर में कोई भी पर्सन सीरियल वाइज किसी भी चीज़ को रिकॉल कर सकता है और कितने एरर्स आ रहे हैं बीच में. नेक्स्ट है
नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, कि कोई भी चीज़ हम भूल रहे हैं तो उसके कुछ रीजंस हैं किस लिए हम भूल जाते हैं. सो ईच वन ऑफ अस हैज़ एक्सपीरियंस फॉरगेटिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑलमोस्ट रूटीनली. वाई डू वी फॉरगेट it? Is it because the information we commit to our long term memory is somehow lost? Is it because we did not memorize it well enough? Is it because we did not encode the information correctly, or is it been storage it got stored, or theories that have been forward forgetting and now till remain that seem a plausible and considerable attention. The first systematic attempt to understand the nature of forgetting was made by Hermann Ebbinghaus, who memorized list of nonsense syllabus CVC trigrams such as NOK or SCP. So etc., and then measured the number of trials he looked to relearn the same list at varying time intervals. He observed that the course of forgetting follows a certain pattern which you can see figure 7.3. फिगर 7.3 देखिए, एबिंगहॉस ने एक कर्व ऑफ फॉरगेटिंग बनाया. उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ जब हमने लर्न करी, हमने सीखी, या कहीं से हमने उसको आइकॉनिक या इकॉनिक किसी भी चीज़ से विजुअल ऑडिटरी सुना देखा, तो कहते हैं कि कोई भी चीज़ 8.8 आवर्स तक हमारे माइंड में रहती है. ठीक है, और अगर हम उसको और 20 मिनट्स तक हम उसको रिकॉल कर सकते हैं. हाँ यार, हमें ध्यान में रहती है. अगर हम उसको और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें तो 1 घंटा भी, या हम उसको और अच्छे से रिहर्स करें तो 8.8 आवर्स भी रह सकता है. तो कहा गया कि अमाउंट ऑफ रिटेन्ड या अमाउंट फॉरगॉटन, कहते कि अगर हम उसको 8.8 आवर्स तक हम अपने माइंड में रखते हैं तो हम उसको तब तक रिकॉल करें तो हमें याद रहेगा. पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते, रिकॉल नहीं करते, ध्यान नहीं देते, तो वो अपने आप ही फॉरगेट होना शुरू हो जाता है. सो एज द फिगर इंडिकेट, द रेट ऑफ फॉरगेटिंग इज मैक्सिमम द फर्स्ट 9 आवर्स, partially during the first hour. After that the rate slows down and not much is forgotten even after many days. Although Ebbinghaus experience considered initial exploration and were not very sophisticated, yet they have influenced memory research in many important ways. It is now upheld almost unanimously that there is always a sharp drop in memory and therefore the decline is very gradual. Let us now examine the main theories which have been advanced to explain forgetting. So आज हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे forgetting due to trace decay. Okay, with this, thank you. Have a nice day.